Today we'll have a discussion on mean free path. I told you in kinetic theory of gases, the scientist Clausius, he said every gas is made up of hard sphere. Okay, and these hard spheres are called molecules. Every gas, you can take any gas, every gas consists of hard sphere. And here Clausius says, let us suppose the hard sphere has a diameter small d. D is the diameter of the molecule. Molecule is supposed to be hard sphere. Every gas is made up of hard sphere. Number one. Number two said these molecules are in the state of continuous, random and rapid motion. Random motion means there is no special direction in which molecule is supposed to move. And rapid means they are constantly moving. And when you increase the temperature of the gas, the speed increases. Molecules start moving vigorously. Next he said, there are collision between the molecules. And then he said molecules are colliding with each other and these collisions are perfectly elastic. Okay? And during each collision, molecules before colliding moves in a straight line with uniform velocity. क्योंकि डायरेक्शन इधर जा रहा है, डायरेक्शन फिक्स हो गई, स्पीड इसकी फिक्स है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और when it collides with the molecule, other molecule of the same gas, then there is a change in both the magnitude and direction of the velocity. डायरेक्शन भी बदल जाती है. फॉर एग्जाम्पल आपने ये मॉलिक्यूल ये ले लिया, वो ऐसे जा रहा था, इधर दूसरा मॉलिक्यूल था, ये स्ट्रेट पाथ था. ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है बिफोर कोलाइडिंग, दिस इज फ्री पाथ डिनोटेड बाय लैम्डा. Okay, the first collision between this molecule and this molecule. Then, according to Clausius, there will be change in the velocity, change in the direction, change in the magnitude. दोनों चेंज हुए. अब मान लीजिए ये ऐसे भाग रहा है. जब मॉलिक्यूल इधर गया तो then there is a change in the direction, change in velocity also, and then it will collide with this molecule and the distance covered will be, let us say, lambda 2. Direction of motion is this. Then after colliding this, again there will be change in the magnitude and the direction of the velocity, but path will be straight. Then it will go, let us say, in this direction, collides with this molecule and covering a distance lambda 3. So far, molecule has suffered 3 collisions. During each collision, path was straight, velocity was uniform, but when it collides, then there is a change in the magnitude and direction of the velocity. Okay, and the distance between two successive collisions, which is free path, in this case will be lambda 2, different from this, depending upon the space between the molecule. Molecules are too tightly packed, but there is one assumption: size of the molecule is very small as compared to the distance between the molecule. Size इतना है और मॉलिक्यूल के बीच में गैप इतना है. इस मॉलिक्यूल से ऐसे टकराना है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, यूनिफॉर्म स्पीड है, और जो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन वो फ्री पाथ है. और ड्यूरिंग एवरी कोलिजन ये फ्री पाथ भी डिफरेंट है. ओके, मान लीजिए अब ये ऐसे जाता है, इन दिस डायरेक्शन पाथ covered is lambda 4. Direction of motion is this. Path is straight. Then let us say ये सीधा इधर आता है. In this case, distance traveled by the molecule before colliding this is larger. This is free path. This is the 5th collision. Okay. Then again after collision, there will be change in the magnitude and direction of the velocity. Let us say it goes in this direction. Here it
collides with this. No, the path followed is straight path and distance covered is lambda 6. तो इनकी डायरेक्शन कोई रैंडम हो सकती है, मतलब कोलिजन के बाद कहीं भी जा सकते हैं? Even before collision, there is no specific direction for any of the molecules. It is a random motion. Random motion means there is no specified direction. There is no choice for a molecule कि मुझे इधर ही जाना है. There is no choice. जिधर गैप मिलेगा उधर जाएगा. Collision के बाद रिफ्लेक्शन होगी, वो रिबाउंड करेगा. These collisions are perfectly elastic. जिस स्पीड से इसने स्ट्राइक किया उसी स्पीड से वापस आएगा. अब किस डायरेक्शन में जाता है डिपेंड अपन. ओके, डायरेक्शन चेंज होनी है कोलिजन के बाद और स्पीड भी चेंज होनी है, मीन वेलोसिटी चेंज होनी है. फिर उसको नेक्स्ट कोलिजन के लिए कितना फ्री पाथ मिलता है, कितना डिस्टेंस मिलता है कोलिजन से पहले, तो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो ये फ्री पाथ first time when it collides with the very first molecule, then in second collision free path is lambda 2, in third collision free path is lambda 3, in fourth collision free path is small, depends upon the gap between two molecules. Okay, then in the fifth collision the distance traveled before colliding is lambda 5. Path is stayed every time, but path during between two successive collision, path is stayed. But overall, if you see, overall, the path is zigzag. कभी इधर गया, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर. अब वालों इधर चला जाता है. Now this is free path lambda 7. Direction of motion is this. Speed is different, direction is different. Distance traveled before colliding is different in every collision. Collision दूसरे molecules के साथ हो रहा है. हाँ. Okay. तो ये if you take the, let us suppose there are n collisions in a given time. So if you take the average of all these free paths, so you will get lambda bar. Lambda bar means mean free path. This will be lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 dash 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 plus lambda n divided by n. N is the number of collisions. This n is number of collisions. And I suppose there it suffers n collisions. So this is mean free path. Mean free path. Average of the mean of all the free paths during n collisions. मीन फ्री पाथ कभी छोटा था कभी बड़ा था, तो हमने मीन निकाल लिया और हमने ये सपोज किया कि नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो n है और n कोलिजन में एवरी टाइम फ्री पाथ इज डिफरेंट, velocity is different, speed was different, direction of motion was different, but path was every time straight. Overall, if you follow this molecule, you follow only one molecule कि किस किस से टकराया, किस किस रास्ते पे गया, तो path will be zigzag. This type of motion is Brownian motion. Okay, and this motion is rapid and random. ओके, मॉलिक्यूल पास जा रहा है और कोलिजन जल्दी से जल्दी करना चाहता है. ओके, दिस इज व्हाट वी मीन बाय रैपिड मोशन. देन रैंडम के पार्टी का जो मॉलिक्यूल है उसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, वो किधर जाना चाहता है, उसकी कोई चॉइस नहीं है. जिधर उसको फ्री पाथ मिलेगा, रास्ता मिलेगा, उधर चल पड़ेगा. रास्ते में कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, उससे टकराएगा. ओके, तो ये जो फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ है, वी हैव टू ट्राई एन एक्सप्रेशन फॉर दिस मीन फ्री पाथ टुडे. ओके, मीन फ्री पाथ इज द मीन ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग n सक्सेसिव कोलिजन्स. एक के बाद एक कोलिजन हुआ, एक के बाद एक कोलिजन हुआ. टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हमने n मान लिया.
ओके, फर्स्ट कोलिजन में फ्री पाथ इतना है, सेकंड कोलिजन में फ्री पाथ इतना है, डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है। जब कोलिजन होगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ विल चेंज, मीन वेलोसिटी विल चेंज। गेट माय पॉइंट? तो लेट अस सपोज के the molecules are first and successive collision, and during each collision the distance traveled is called free path, and this free path is different during different collisions. Therefore we have to take the mean, so that's why it is called mean free path. Okay, now in order to drive an expression for this we have to take some assumptions. हमें assume करना पड़ेगा. There are 3-4 assumptions. Number 1, कि every molecule is a hard sphere of diameter d. First assumption. Second assumption, molecules will collide with the other molecules, and these collisions will be perfectly elastic. Third assumption, the size of molecule is small as compared to the distance between two molecules. Molecule का अपना साइज छोटा है, लेकिन दो molecule के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है as compared to the size of one molecule. और next assumption, which is very important, that is, you take the zigzag motion of a particular molecule, which is a hard sphere of d diameter. This molecule is under consideration कि ये collide कर रहा है गैस के जो remaining molecules हैं, क्या वो सबसे collide करेगा या किस किस से करेगा? इसके लिए हमने सपोज किया molecules except this molecule, all other molecules are in the state of rest. This is contradiction to kinetic theory of gases assumption. उसमें क्या बोला था? All molecules are in the state of random and rapid motion. No molecule was in the state of rest. अब हम क्या सपोज करें? To drive an expression for mean free path, हम क्या सपोज करें कि except this molecule under consideration जो collide कर रहा है बाकियों से, अब बाकी सारे molecules they are in the state of rest. Though this is not a fact, सारे molecule थोड़ा बहुत मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हमने ये सपोज किया for simplicity कि except this molecule which is under consideration, all other molecules of the gas are in the state of rest. समझ में आ गया? So the molecule, this molecule will collide with all those molecules which lie within a distance of diameter of the molecule. इसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ. Let us suppose एक सिलेंडर है जिसका रेडियस इक्वल टू डायमीटर ऑफ वन मॉलिक्यूल. ओके, ये इसका एक्सिस है, ये एक मॉलिक्यूल है, स्फेरिकल है, ये उसका सेंटर है और ये उसका डायमीटर है. देख रहे हो? कंसीडर ए सिलेंडर of radius equal to diameter of one molecule. Okay, this is one molecule which is to a molecule under consideration. Let us suppose moving along the axis of this cylinder. Okay, this molecule is constantly under rapid and random motion. All other molecules are in the state of rest. एक molecule इधर है, इसका ये सेंटर है,
ओके, एक मॉलिक्यूल इधर है, उसका ये सेंटर। I've taken 3 molecules. Molecule under consideration, which is to collide with the other molecules. Other molecules are this and this. So when this molecule will be going, it will be colliding with this. Why? Because the distance between this center of this and center of this, ये वाला जो distance है, ये वाला, अगर इससे कम है या इसके बराबर भी है, there will be collision. जैसे फुटबॉल ले लेते हैं या कोई भी बॉल ले लेते हैं, अब ये ऐसे जा रहा है, इसके इधर एक और फुटबॉल है, दोनों कांटेक्ट में आ गए, दोनों में डिस्टेंस कितना हुआ, सेंटर टू सेंटर, डायमीटर ऑफ वन फुटबॉल, सारे फुटबॉल सेम साइज, क्योंकि molecules of the same gas, they are identical in every respect, same size, same mass. Okay, so I am considering gas molecule as a ball, hard ball. Okay, diameter छोटा d. और फिर दूसरा molecule ये, अब ये से टकराएगा कि नहीं, अब ये इसका सेंटर और इसका सेंटर अगर d डिस्टेंस से ज़्यादा सेपरेशन है तो कोलिजन नहीं होगा। तो ये जो जा रहा होगा तो उन सभी मॉलिक्यूल से ये स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, जिनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस d या d से कम होगा। ठीक है ना, ये डिस्टेंस d है भाई, और ये डिस्टेंस इसका और इसका लेस देन d हो गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। Molecule under consideration will collide with all those molecules which lie within a distance of d, center to center distance. क्लियर? अब आप इसका देखो, इसका सेंटर देखो, ये भी साइज तो इसका सबका सेम है ना। अब यहाँ देखो, इसका सेंटर यहाँ कहीं है। ओके, अब ये d है, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर का डिस्टेंस आप कंपेयर कर लो, ये जो डिस्टेंस है लेस देन d है, d तो ये है ना। अभी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो कम हो गया ना, इसका फॉर दिस आल्सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है d डबल डैश, ये भी लेस देन d है। इट मीन्स अब ये मॉलिक्यूल जा रहा होगा तो इससे भी कोलिजन होगा, उसका इससे भी कोलिजन होगा। दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल है। तो इसलिए मॉलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन विल कोलाइड विद ऑल दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच लाई विद इन ए डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू डायमीटर ऑफ वन मॉलिक्यूल। ओके, तो इट मीन्स molecules lying in this cylinder, whose radius is d, all those molecules which lie within the cylinder, with all those molecules, this molecule will strike, collision होगा। जितने भी molecule इस cylinder के अंदर है, सबके साथ इसका collision होगा। तो let us suppose c is the average speed and delta t is the time in which we are considering the various collisions. Okay, so with this speed and in this time ये मॉलिक्यूल कितनी दूर चला जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, मान लो ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये स्पीड, ये टाइम, ये मॉलिक्यूल यहां से स्टार्ट होकर यहां पहुंच गया। विद दिस स्पीड इन दिस टाइम दिस मॉलिक्यूल will collide with all those molecules which lie within the cylinder. And condition for collision is the distance between the center of two molecules must be less than the diameter of the molecule.
अब इसका सेंटर देख लो, इसका सेंटर देख लो, और सिलेंडर अंडर कंसिडरेशन उसका रेडियस देख लो। ये डी जो डायमीटर ऑफ वन मॉलिक्यूल है, अब ये इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है, लेट अस से डी डबल डैश है विच इज लेस देन डी, डेफिनेटली इसका कोलिजन होगा। सिमिलरली ये मॉलिक्यूल, इसका डिस्टेंस और इसके सेंटर में डिस्टेंस डी डैश है जो कि लेस देन डी है, लेस देन द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल अंडर कंसीडरेशन, इसके साथ भी कोलिजन होगा। ओके, तो इस सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे डेल्टा टी टाइम में, विद दिस स्पीड डेल्टा टी टाइम में मॉलिक्यूल कितनी दूर चला जाएगा, दिस इनटू दिस, स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस वो आगे चला जाएगा। और रास्ते में जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनका इसके सेंटर से डिस्टेंस लेस देन डी होगा, उससे इसका कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबके साथ कोलिजन होना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज, ये रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, इनटू जो डिस्टेंस कवर किया इन डेल्टा टी टाइम, दैट इज सी इनटू डेल्टा टी। This is the volume swept by this molecule under consideration. बाकी molecules को तो हमने रेस्ट में मान लिया ना, हमारी assumption थी कि except this molecule under consideration, all molecules of the gas are in the state of rest. बाकी सब रेस्ट में, सिर्फ ये मोशन में, और इसका पाथ zigzag है। कोलिजन से पहले पाथ स्टेट है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कोलिजन के बाद there is change in the magnitude of the velocity as well as the direction of the velocity, the change in the velocity, magnitude भी change होगी, direction भी, और जो distance covered between two successive collisions, that is free path. Okay, and in every successive collision free path is different, so we have to take the mean, that is mean free path denoted by lambda dash, ये mean free path है। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू n इज नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, या पर यूनिट वॉल्यूम ले लो, चलो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ इसकी कोलिजन इतने हुए हैं, और इसका वॉल्यूम तो ये है, ठीक है ना। तो टोटल कोलिजन कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट इज पाई डी स्क्वायर सी बार डेल्टा टी इंटू एन। N is number of collision taking place per unit volume. Okay, and volume of this cylinder is pi d square c bar into delta t. So फिर there how many total number of collisions? Okay, and what is the number of collision per second? These collisions have taken place in this time. पर सेकंड कितने हुए, इसे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, दैट इज पाई डी स्क्वायर सी बार डेल्टा टी इंटू एन अपॉन डेल्टा टी, दिस गेट्स कैंसल्ड।
Clear? Okay, this lambda bar, mean free path, is sum of all free path divided by number of collision. तो नंबर ऑफ collision हमने n माना, और ये इतने collision कितने टाइम में हुए? डेल्टा टी टाइम में. So how much is the total distance traveled by the molecule in time delta t? In time delta t, so many collisions have taken place. The total distance covered by the molecule during n number of collisions. Total distance is this plus this plus this plus this plus this. Okay, and this distance has been covered with the speed this, in time this. ये टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड ले ली, टोटल टाइम ले लिया, स्पीड इनटू टाइम टोटल डिस्टेंस हो गया. दिस इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस, इसकी जगह हमने ये लिख दी, ये टोटल डिस्टेंस है. अभी देखो ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यही तो टोटल डिस्टेंस है. और नंबर ऑफ कोलिजन हुए n, टोटल डिस्टेंस कवर हुआ विद एवरेज स्पीड c इन टाइम डेल्टा t, ये तो फिर फ्री पाथ हो गया c डेल्टा t बाय n, मीन फ्री पाथ. ओके, so this is number of collision per second, pi d square c n. ये collision frequency है, number of collision per second. Got my point? So what is the time between two successive collision? Time between two successive collisions. That is, T is equal to this is the number of collision per second, means frequency, and frequency and time, they are related to each other. Time is reciprocal of frequency. ये नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है ना, एक सेकंड में कितने कोलिजन हुए. ओके, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, इसका रेसिप्रोकल वो टाइम हो जाएगा, तो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा. ओके, तो वो कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो क्या होगा 1/pi d square n c. सर ऊपर c के बाद नहीं n था, नीचे n के बाद c है, वो लिख सकते हैं सर. हाँ जी, जो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड है उसमें pi d स्क्वायर नंबर ऑफ कोलिजन सर नीचे नंबर पर सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड. सर जैसे इसमें c के बाद n आ रहा है, हमने सक्सेसिव कोलिजन में n के बाद c लगा दिया, तो नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं. n पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. सर सेकंड assumption के बारे में repeat करना प्लीज. Second assumption, first assumption was every gas is made up of hard sphere of diameter d. Second assumption was molecules collide with each other and these collisions are perfectly elastic. Third assumption was the size of the molecule is very small and the distance between as compared to distance between two molecules. Okay, and the fourth assumption
A molecule will collide with all those molecules which lie within a distance smaller than d. equal to or less than diameter of the molecule. Or say, sir, they always collide in a straight line. Molecules before collision move in a straight line with constant speed, constant velocity. But after collision, there will be change in the magnitude and the direction of the velocity. Okay? Yes, sir. So therefore, the distance covered between two successive collisions is free path, and these distances during different collisions were different. So that's why we took the mean. So that is mean free path, and we have to go for the expression for the mean free path. ठीक है? तो मीन फ्री पाथ को हमने लैम्डा बार लिख दिया, लैम्डा बार. और वी हैव ड्राइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर द मीन फ्री पाथ जो कि हमारे पास आ गया. सब ठीक है. तो हमने नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड ले लिया, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पाई डी स्केयर सी, ये है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पाई डी स्केयर सी बार एन. उसके बाद एवरेज टाइम बिटवीन टू, इसका रेसिप्रोकल ले लिया. ठीक है? Yes, sir. हाँ, अब हमने ये जो मीन फ्री पाथ लिया वो ये ले लिया. ठीक है ना? तो अब हम इसमें अब ये वैल्यू डालनी है हमने. वी हैव टू गो फ्रॉम लैम्डा बार. तो व्हाट इज लैम्डा बार? मीन फ्री पाथ. दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद एवरेज वेलोसिटी c in time t. ये है. ठीक है? मीन फ्री पाथ ये आ गया ना. अब ये जो मीन फ्री पाथ है, ये इसी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद एवरेज स्पीड c बार इन टाइम t. Got my point? तो ये t आपके पास आ गया. अब इसको से मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ पुट कर दो. दिस विल बी c into t, time between two successive collisions. This will be 1 over pi d square n c. ये कैंसिल हो गया. So you will get lambda bar mean free path as 1 over pi d square n. ओके. हम यहाँ पहुँच गए. मीन फ्री पाथ इज 1 over pi d square n. What was n? Number of Number of collisions. collisions. What was d? Diameter of one Diameter of molecule. one molecule. And what is lambda bar? Mean free Free path. path. Okay. If you take m as the mass of one molecule, mass of one molecule, and n is number of molecules per unit volume. Number of molecules per unit volume. So what will be m into n? This will be mass of the gas per unit volume. Mass of one molecule into number of molecule, and this number of molecule is per unit volume. Okay, not the total number of molecule. Number of molecule per unit volume. So this will give you mass of the gas per unit volume, and this is otherwise equal to density. Mass per unit volume is density. This is density of the gas.
Mass upon volume is density. Okay? So I have taken m as the mass of one molecule and n is the number of molecules per unit volume. And when you multiply these two, it will give you mass of the gas per unit volume. And mass per unit volume is the density. So you will get this as the density. So m into n is rho. Get the value of n, rho by m. So you can give different shape to mean free path. Formula को नया shape दे दो by replacing n by rho by n. तो क्या आएगा? 1 over pi d square n is ये rho by m. So it will give you m over pi d square rho. Clear? You can write this mean free path in different way also. For example, if you have n as the total number of molecules, and V is the volume of gas. Total number of molecules N, capital N, whereas small n was number of molecules per unit volume. So you have N by V as क्या आएगा? Total number of molecule divided by total volume. This will give you number of molecule per unit volume. Yes, sir. Small n. Okay? Yes, sir. So you can replace this small n by V. Yes, sir. This n can be replaced by this. So you will get lambda mean free path as 1 over pi d square n. That is total number of molecule upon total volume. Okay. Now if you make use of ideal gas equation for 1 mole, PV is equal to RT. PV is equal to RT. And what is R? It is gas constant. And if you divide this gas constant by the number of mole, Avogadro number, in 1 mole, how many molecules are there? Equal to Avogadro number. And this R by N is called Boltzmann constant. You know the value of capital R, gas constant, it is 8.31 joule per mole per Kelvin. But Boltzmann constant is 1.38 into 10 raised to the power minus 23 joule per mole per Kelvin. So R by N is this, so you replace R by Kb into N. Okay? Yes, sir. So from here R will be N into Kb. So you have PV is equal to N Kb into T. Okay? Now get the value of N by V from this N by V. So you will get N by V as P upon Kb into T. And this is also equal to small n. Small n is N by V. And making use of ideal gas equation, for 1 mole, you will get N over V as P by Kb into T.
So in this expression here, mean free path is equal to 1 over pi d square n by v. Replace this n by v by p over this. तो क्या आएगा, ये डिवाइड करें ना, ये तो ये ऊपर चला जाएगा, Yes, sir. के बी इंटू टी बाय पी. Okay, so we have derived an expression for the mean free path, and we have given different shapes to mean free path. Expression is this, and this expression has been derived making use of the assumption that except molecule under consideration, all other molecules are in the state of rest. But actually this doesn't happen. All molecules are in the state of motion. Okay, so making use of this fact that all molecules are in the state of motion, whereas we have derived this expression making use of the assumption that except molecule under consideration, all others are in the state of rest. But actually all others are also in the state of motion. So we have to make some correction for this assumption. So we will get expression for this, considering the molecules, other molecules are also in the state of rest. तो हम इसके लिए मॉडिफिकेशन करेंगे, दैट इज इसको √2 से डिवाइड करेंगे. This is the expression when you suppose that all molecules are in the state of motion, and this is the expression when you suppose that molecule under consideration is in motion, all other molecules are in the state of rest. There is a difference between this expression and this expression. This is based upon the assumption that only molecule under consideration is in the state of rapid and random motion, whereas fact is all other molecules are also in the state of motion. Therefore you have to go for some modification in this relation. तो उसके लिए हम √2 से डिवाइड करते हैं. So you have to apply this or this depending upon which assumption you are following. Okay. Now let us consider the factors on which mean free path depends. You have many relation, this relation, you have this relation, you have this relation. So make use of these three relations and find out the factors on which mean free path will depend. Okay? You can make use of this relation also. जिसमें आपने डेंसिटी भी ले लिया, n की जगह rho by m लिखा. ये make use of this relation also. ये क्या कहता है? The mean free path is directly proportional to mass of the molecule. One factor. और क्या कहता है ये? The mean free path is inversely proportional to the density of the gas. Clear? और ये क्या कहता है? Mean free path inversely proportional to the size of the molecule. Molecules of different gases, they are of different sizes. Yes, sir. Molecules of the same gas are identical. Okay? तो मीन फ्री पाथ किस गैस का निकाल रहे हैं? उस गैस के मॉलिक्यूल का साइज डिफरेंट होगा. Yes, sir. So that means mean free path will depend upon the diameter of the molecule also. But if you look at this relation, so what does this relation suggest? The mean free path is directly proportional to absolute temperature. If you look at this, making use of pressure, that mean free path is inversely proportional to pressure of the gas. So let us compile. जितने भी फैक्टर जहाँ जहाँ से आपको डिपेंडेंस मिल रही है, सारे को एनालिस्ट करते हैं. The factors on which mean free path depends. आप कौन कौन सा रिलेशन ले रहे हैं, ध्यान रखना. Factors on which mean free path depends.
Okay, number one, making use of this relation. A mean free path is directly proportional to mass of the molecule. M is mass of molecule. Number two, mean free path inversely proportional to density. Rho is density of the gas. Number three, mean free path is inversely proportional to square of the size of the molecule. D is diameter of one molecule. Number four, making use of this relation. Mean free path directly proportional to absolute temperature. T is temperature of the gas in Kelvin. Number five, mean free path inversely proportional to pressure. Pressure of the gas. Okay, so basically 5 factors on which mean free path depends. So lesson is over. So we'll start with the next lesson, SHM and wave next time.